Today we will understand the rank, genus and taxonomy. A genus groups closely related species that share common features and evolutionary relationship. By the end of this lecture, you will clearly know how genus connects species with higher classification. Outlines: in this lecture, we will explore the genus category, understand the important generic characters used in classification. We will learn the true meaning of genus and study simple real-life examples for better understanding. Lecture outcomes: by the end of this lecture, you will be able to define the term genus and explain its role in biological classification. You will understand the important generic characters used to group related species, differentiate between genus and species with zoological examples, and analyze the significance of genus and taxonomy, scientific naming, and evolutionary relationship. You will also apply this concept to real-life organisms for better understanding. Genus. A genus is the taxonomic category placed directly above species in the Linnaean hierarchy. It is considered the lowest obligatory higher category in classification. Organisms placed in the same genus are usually closely related and share similar structural, genetic, and evolutionary characteristics. This means they are believed to have evolved from common ancestors, making the genus generally a monophyletic unit. For example, in the scientific name Homo sapien, the word Homo represents the genus, while sapien represents species. So we can say that a genus acts like a biological group that connects several related species based on their similarities in evolutionary relationship. So आसान अल्फाज में पहली बात ये कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि लोअर कैटेगरीज है और हायर कैटेगरीज है। स्पीशीज और सब स्पीशीज लोअर कैटेगरीज हैं और जेनस से ऊपर, जेनस और उससे ऊपर आप फैमिली, ऑर्डर, क्लास अप टू किंगडम, डोमेन, ये हायर कैटेगरीज हैं। तो हायर कैटेगरीज में सबसे लोएस्ट कैटेगरी जेनस है। तो जेनस लाइज अबाउट स्पीशीज, स्पीशीज के बिल्कुल ऊपर जेनस है और जेनस हायर कैटेगरीज में सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। दूसरी बात ये हो गई कि जेनस में तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होगी, एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके सेम होंगे, वो एवोल्यूशन के बेस पे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि ये मोनोफाइलेटिक यूनिट है। मोनोफाइलेटिक का मतलब होगा कि इनकी एंसेस्टर जो है वो सेम थे, वो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। और होमो सेपियन एक साइंटिफिक नेम है, तो इसमें होमो जेनस है और सेपियन स्पीशीज है। अब होमो एक जेनस है, इसके अंदर कई सारे डिफरेंट स्पीशीज हो सकते हैं और वो स्पीशीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होंगे, तब जाके हम उनको एक ही जेनस में रखते हैं। Now, species belonging to the same genus may still look different from each other. Why? Because they adopt to different ecological niches and environmental conditions over time. This process is called adaptive radiation. In adaptive radiation, organisms originating from a common ancestors gradually develop different characteristics to survive in different habitats or food sources. A famous example is Darwin finches of the genus Geospiza. Although all these birds belong to the same genus, they develop different beak shapes according to their diet, such as seeds, insects, cactus material, or nectar. So even when species evolve different adaptations, they still retain important fundamental similarities that keep them within the same genus. So जिस तरह हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया कि जिनस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मोनोफाइलेटिक होंगे, मीन उनकी एंसेस्ट्री सिमिलर होगी, सेम होगी। तो इसकी एक एग्जांपल जो जियोस्पीजा जेनस का लिया गया है, ये डार्विन फिंचेस हैं और इनमें एडाप्टिव रेडिएशन हुई जब इनकी एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन मुख्तलिफ इकोलॉजिकल निशेस में एंटर हुई। तो जो स्पीशीज ए थी वो सीड ईटर बन गई, इसी तरह जो स्पीशीज बी थी वो इंसेक्ट ईटर बन गई।
और सीड ईटर की भी डिफरेंट किस्म की है, इंसेक्ट ईटर की डिफरेंट किस्म की है, कैक्टस ईटर की डिफरेंट किस्म की, नेक्टर ईटर की और डिफरेंट है, और वर्म ईटर्स की और डिफरेंट है। बट ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू द सेम जीनस, क्योंकि इनकी जो एंसेस्ट्री है वो सेम है, इनकी एंसेस्टर एक जैसे हैं, तो इसको मोनोफाइलेटिक कहते हैं, कि जिसमें ये तमाम ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हों। तो जिनस वही यही चीज है कि इनमें एंसेस्टर सेम होगा, और जो बाकी इसके अंदर स्पीशीज होंगे उनका ताल्लुक इसी एक एंसेस्टर से होगा, और हम इन तमाम स्पीशीज को उसी एक जिनस में रखेंगे। तो कॉमन नेसेसिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बात आप लोग अपने जहन में रखें। Genus gap. The genus gap refers to the degree of separation between one genus and other closely related genera. In very simple words, species belonging to the same genus are grouped together because they share many similarities, while species of different genera are separated by a noticeable taxonomic gap. So, an important point to remember is that the size of the genus gap is usually inversely proportional to the size of the genus. This means a small genus with only few species usually has a large gap separating it from other genera. A large genus containing many species usually has smaller gap from related genera because there are more intermediate variations. For example, the genus Felis contains relatively few species and is clearly separated from related genera like Panthera. On the other hand, the genus Cyperus contains many species, so the differences between it and nearby genera become smaller. So the concept of genus gap helps taxonomists understand how closely or distinctly related different genera are. जीनस गैप को समझना बहुत आसान है। हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक जीनस में रख देते हैं। अब जिस जीनस के अंदर स्पीशीज कम होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल जीनस ए में स्पीशीज कम है और सेम जीनस बी में भी स्पीशीज कम है, तो जितने किसी स्पीशीज में जीनस में स्पीशीज कम होंगे, उतना उस जीनस का और बाकी जीनस के दरमियान गैप ज्यादा होगा। गैप किस चीज का गैप? गैप कैरेक्टरिस्टिक्स का गैप, कि जितने कम स्पीशीज किसी जीनस के अंदर होंगे, उतना कैरेक्टरिस्टिक वाइज उसके कैरेक्टरिस्टिक उतने ज्यादा डिफरेंट होंगे बाकी जेनरा से। और अगर किसी जीनस के अंदर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, ये याद रखें कि अगर यहाँ पर स्पीशीज कम होते हैं तो गैप ज्यादा होता जाएगा, और अगर किसी जीनस के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 3 स्पीशीज थी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक के अंदर 6 स्पीशीज है, तो स्पीशीज का नंबर बढ़ गया। अब जितने स्पीशीज बढ़ते जाएंगे उतने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होते जाएंगे, और जब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होते जाएंगे तो दोनों के दरमियान जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स का गैप है, वो जो पहचान का गैप है, वो कम होता जाएगा, क्योंकि when more and more species are coming together, तो चांसेस हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर हो जाए। तो इस वजह से जब किसी जिनस के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे, तो उसके बाकी जिनरा के साथ वो गैप जो है कैरेक्टरिस्टिक का, वो कम होता जाएगा। और रियल एग्जांपल में आप देख लें, तो ये तो कंसेप्ट डायग्राम था, यहाँ पर रियल एग्जांपल में आप देखें तो जिनस फिलस के अंदर आप देखें बहुत कम नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, और इसी तरह इस वजह से जो इसके बाकी रिलेटेड स्पीशीज है लाइक पांतेरा, तो उनके साथ और इनके दरमियान जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। कैरेक्टरिस्टिक वाइज आप उनको देखें तो बहुत ह्यूज गैप आपको नजर आ जाएगा, बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। इसके बरक्स अगर आप दूसरी तरफ जो साइप्रस, जो कि बहुत बड़ा जीनस है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीशीज है, तो उसके फिर बाकी जनरस के साथ गैप कम हो जाता है, और उसकी रीजन यही है कि इसके अंदर स्पीशीज ज्यादा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मोर एंड मोर सिमिलर हो जाएंगे, और इस वजह से इनके दरमियान गैप भी कम होता जाएगा। Though adaptive radiation is not our topic today, but I added this to my presentation just to make it easy for you. Adaptive radiation is a process in which organisms from a single ancestral species
rapidly diversify into many different species. This usually happens when organisms enter a new environment where there are new resources, new ecological opportunities, or different environmental challenges. As populations adopt to different ecological niches, they gradually develop different characteristics. Over time, this leads to the formation of multiple species adapted to different lifestyles and habitats. A classic example is Darwin finches of the Galapagos Islands. All finches evolved from a common ancestor, but different species developed different beak shape according to their food sources, such as seeds, insects, cactus material, or nectar, as we discussed it in detail in the previous slide. Another important example is the diversification of mammals after the extinction of dinosaurs. When extinction occurred, dinosaurs disappeared. Many empty ecological niches become available, allowing mammals to evolve into wide variety of forms such as whales, bats, primates, and elephants. So, adaptive radiation shows how evolution can produce great diversity from one ancestral lineage when organisms adapt to different environmental conditions. Uh, adaptive रेडिएशन बहुत सिंपल जब एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन को आप डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में डाल देंगे जहाँ न्यू रिसोर्सेज हो न्यू चैलेंजेस हो न्यू इकोलॉजिकल नीशेस हो तो जो एनिमल्स होंगे जो कि एक सिंगल पॉपुलेशन सिंगल पेरेंट से आए होंगे एंसेस्टर से आए होंगे उनमें वक्त के साथ साथ अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट चेंजेस आ जाएंगे और न्यू स्पीशीज बन जाएंगे और इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल हमने डार्विन फिंचेस ले ली और एक दूसरी एग्जाम्पल जो कि रियल वर्ल्ड से है वो है कि जब डायनासोर दुनिया में थे तो वो बहुत ज्यादा ह्यूज थे बहुत ज्यादा थे बहुत ताकतवर भी थे तो उस वक्त उन्होंने सब कुछ पर सब रिसोर्सेज पर इकोलॉजी पर कब्जा किया हुआ था बट जब इनकी एक्सटेंशन हुई और वो खत्म हो गए तो जो इकोलॉजिकल नीशेस थी इकोलॉजिकल हैबिटाट्स थे वो खुल गए और वहां पर स्पेस बना तब जाके मेमल्स ने बहुत तरक्की की और उसमें वेल्स बने बेट्स बने प्राइमेट्स बने एलिफेंट्स और कई सारे और न्यू स्पीशीज एराइज हो गए so this is these two are the real world examples from adaptive radiations. Generic characters. Generic characters are the important shared features that are common among the species of a genus. These characters help taxonomists recognize and classify organisms into the correct genus. Two important scientists associated with this concept are Linnaeus and Charles Darwin. According to Linnaeus, the genus give rise to the characters. However, this idea was later considered incorrect. Modern taxonomy accepts the opposite idea. It is the characters that help in the recognition and identification of a genus. Linnaeus also stated that the recognition of a higher taxon depends on the correlation of common features among component species. This statement is still accepted in today taxonomy. According to Darwin, a character becomes important when it is correlated with several other characters. Even very small or inconspicuous traits can be important if they consistently occur together. For example, in the genus Panthera, animals such as lions, tigers, and leopards share common characters like powerful bodies, carnassial teeth, and retractable claws. Similarly, in plant genus hibiscus species share features such as large flower and staminal column. So, generic characters help scientists understand the natural relationships among organisms and classify them more accurately. So जेनरिक कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू लिनायस लिनायस ने कहा कि जिनस जो है वो कैरेक्टर्स उससे बनते हैं बट बाद में ये स्टेटमेंट गलत हुआ और उसके बाद जो मॉडर्न टेक्सोनोमी में डेफिनेशन है या जेनरिक कैरेक्टर्स का मतलब है कि
जब कॉमन फीचर्स और कॉमन कैरेक्टर्स जमा होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक जिनस को बनाते हैं, न कि जिनस कैरेक्टर्स बनाता है। ऐसे नहीं होता, बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के, और उससे जाके फिर जो है वो जिनस बन जाता है। और डार्विन ने कहा कि बहुत छोटे और माइन्यूट इनकंस्पिकुअस, ऐसे कि जो बहुत हिडन हो या बहुत स्मॉल हो, बहुत माइन्यूट कैरेक्टर्स हो, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं अगर वो किसी जीनस की स्पीशीज में कंसिस्टेंटली मौजूद होते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है रियल वर्ल्ड से, वो पांतरा स्पीशीज के हैं। एक तो इनकी पावरफुल बॉडीज होती है, कार्नेजल टीथ होते हैं इनके, और इनके जो क्लॉज है वो रिट्रैक्टेबल है, और इसी तरह स्पॉटेड सॉलिड कोट पैटर्न इनके ऊपर होता है। तो जिनस पांतरा की ये खसूसियत है। तो अब अगर इनमें से बहुत माइन्यूट और छोटे क्रिएटर भी हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट है अगर वो कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड हो। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके जिनस पांतरा बनाएंगे, न कि पांतरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएगा, बल्कि यही कैरेक्टरिस्टिक जो हमने इनमें स्टडी किए, ये मिलके एक जिनस को तरतीब देंगे और इससे एक जिनस बनेगा। सिमिलरली द एग्जांपल फ्रॉम द हिबिस्कस, कि जिसमें लार्ज फ्लावर को और मेनी स्टेमिनल कॉलम्स को बनाया गया, कि इनके जो स्टेमिनल कॉलम्स है वो इनमें एक जैसे हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जाके genus hibiscus बनाएंगे। Meaning of genus in a broader biological sense. First, a genus is considered a monophyletic or phylogenetic unit because the species included within a genus have evolved from common ancestors and share a common evolutionary lineage. Secondly, a genus can be also considered an ecological unit. Species belonging to the same genus often occupy related habitats and are adapted to somewhat similar mode of life. Another important concept is the genus niche. The niche of a genus is usually broader than the niche of an individual species because a genus includes several species living slightly under different ecological conditions. Species within the same genus also show a degree of genetic similarity due to common ancestry. Because of this similarity, hybridization may sometime occur between closely related species. A common example is mule, which is produced from a horse and a donkey. According to Dobzhinsky, by studying a genus and its characters, we can understand pattern of adaptive radiation, evolution, and divergence among species. For example, species of the genus Panthera, such as lions, tigers, and leopards, share common characteristics due to their close evolutionary relationship. Similarly, species of the plant genus Hibiscus share common floral features. So, overall, a genus represents a natural group or group of related species that share common ancestry, ecological similarities, and evolutionary relationship. Thank you for watching. I hope this lecture made the concept of genus clear and easy for you to understand. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe, and share this video with your friends. Your support really helps the channel grow. If you have any questions or need a further clarification, feel free to ask in the comment section. I will see you in the next lecture. Keep learning and stay curious.